Namaskar, dear friends. Once again, I welcome you to my YouTube channel, History Made Easy by Yogesh Kumar. And today, what we are going to do, dear friends, today we are going to talk about chapter number 1, that is of class 12th history, bricks, bones, and beads. So, this chapter basically deals with the Indus Valley civilization. And roughly, if you want to understand about the time period of Indus Valley civilization, so that is roughly from let's say 2600 BCE. It starts from that point of time. And there are different phases of Indus Valley civilization. There was pre, mature, and late Harappans. So in this particular chapter, we are going to talk about the habits and the style of living of Indus Valley people. Now, when you talk about NCRT book, the very first page deals with what sort of food items they used to eat. So, if we talk about the food items. So, and when we say subsistence strategies is whatever uh, systems they evolved to survive. So, different food items they used to have, and my dear friends, we need to be very particular with this thing that we we do have written records of Indus Valley civilization, but the biggest challenge is that we are not able to decipher the script. So whatever information, knowledge is available, that is available through the material remains that we have found from different sites of Indus Valley civilization. So talking about the type of foods they used to eat, so I have mentioned in this particular slide wheat, barley, lentil, chickpea, and sesame. These were the things that we have found. Millets were also there. The finds of rice यानी चावल बहुत कम मिलता था. ठीक है. और इस काम को करता कौन है बेटा? अब हमें पता कैसे चलता है? All those things were available there. So the people, those who talk about the different plants of ancient period, they are known as archaeobotanists. And again, we have found the remains of animals also. We have found the bones of sheep, goat, buffalo, and pig. And animals were also being domesticated. So the people, those who study about animals, ancient animals, ancient animal remains, they are known as archaeologists, right? So this slide basically deals with what sort of food items they used to eat, and we have found different material remains for that. Moving forward, we talk about again, we're talking about rice. The find of rice was rare. We talked about wheat, barley, lentil. It means they practiced some sort of agriculture. So when we talk about what sort of agriculture and what sort of tools they used to have, so because we have finds of grain, so we are very evident that agriculture was being practiced. In this particular picture, something is being shown, that is a plow. We have found the seals and terracotta sculpture of bull. So if bull, then bull was being used for agriculture. We have found evidences of plow also. Kalibanga, that is a site in Rajasthan. The field had two set of furrows at right angles to each other. दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था. इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर इकट्ठे की जाती थी, यानी दो डिफरेंट क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड at one point of time. So one important thing which we need to know, that the area which has been covered by Indus Valley sites, most of that areas comes under semi-arid region. Now semi-arid region का मतलब ये होता है बच्चों कि वहाँ पर rainfall कम था. इसका मतलब they used some sort of methods for irrigation. And what sort of methods were used for irrigation? We have water reservoirs. Finds of canals are rare. Tanks मिला है, water reservoirs मिला है. Finds of canals are rare. We have found traces of canals in short Bay, Afghanistan. But generally, the tanks or the water reservoirs were being used for water. Now, moving forward, when we talk about different Indus Valley sites were being discovered, and the best known site that was being found, that is known as Mohenjo-daro. Harappa was the first known site, but the biggest and the largest site, that is known as Mohenjo-daro. This settlement was basically divided into two parts, two sections. One was smaller. The smaller section,
that was being known as citadel, and the larger section that was being known as lower section that was being termed as what? Lower town. So both citadel and lower town, they both were being walled. They both were built on platforms, but the platform of citadel was higher, right? Different buildings were built on citadel as well as in lower town. Moving forward, now we say that the city was well planned. Indus Valley sites are known as town-based civilizations, which are based on towns. शहरों में जीवन होता था. शहर भी हमारे जैसे शहर नहीं. They were very well planned. We have found n number of evidences which suggest that the towns were well planned. There was drainage system. ब्रिक्स का साइज क्या था? स्टैंडर्डाइज, सेम साइज की ब्रिक्स आपको मिलेंगी. पहले रोड्स बनते थे, हाउसेस वर बिल्ट लेटर ऑन. रेजिडेंशियल बिल्डिंग के डिजाइन भी एक जैसे थे. हर घर के अंदर कोर्टयार्ड, बीच में आंगन होता था, कोर्टयार्ड, राइट. रूम्स ऑन ऑल साइड्स. कोर्टयार्ड के अंदर सारी एक्टिविटीज होती थी. देयर वर वॉशरूम्स. ड्रेन ऑफ वॉशरूम्स वर वेल कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन. You cannot look inside the house. There was privacy, no windows on the ground floor. So all those things suggest what? This suggests that the towns were being very well planned. Now other buildings have been found in a citadel, and two buildings we are talking in this particular slide. One picture is being shown. This is known as Great Bath, and another building was warehouse. Now Great Bath, it's a rectangular tank surrounded by corridors. चारों तरफ corridors होते थे. You can take entry from north and south. दो तरफ stairs थी north and south के अंदर, right? 3 साइड रूम्स थे. एक रूम के अंदर बड़ा लार्ज वेल था. इट मींस जो अंदर नहाना चाहता था, ओपन में बात नहीं करना चाहता था, तो वहां चले जाते थे. This structure was very unique, and this uniqueness suggests that this might have been used for some religious rituals. Even today we follow different religious rituals. Now again I'm telling you, we do have written records, but we are not able to decipher them. So because of that reason, most of our information is based on the material remains. Now there were differences, economic and social differences. How do we come to know about कि उनके सामाजिक और आर्थिक रूप से उनके बीच में अलग अलग तरीके के लोग थे? इसका मतलब रिच, पुअर, इन्फ्लुएंशियल, कॉमन, अलग अलग तरीके के लोग सोसाइटीज के अंदर रहते थे. तो इसका एग्जांपल हमें बड़े क्लियरली यहाँ पर मिलता है. सबसे पहले हमें मिलता है बरियल साइट से. बरियल साइट्स वो होती है बच्चे जहाँ पर लोगों को, डेड बॉडीज को दफनाया जाता था. तो जनरली उनको पिट्स, गड्ढों के अंदर खोद के दफना दिया जाता था. लेकिन बरियल्स डिफरेंट होते थे. कुछ बरियल्स के अंदर हमें क्या मिला है? उसके अंदर पॉटरी आइटम्स मिला है, उसके अंदर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, which suggest that they believe of life after death. कई जगह ज्वेलरीज मिली है. तो जब ये अगर एक्सपेंसिव आइटम्स मिले हैं, it means these burials belong to which type of people? Rich people. और जो कॉमन बरियल्स होते थे वो जनरली पिट्स के अंदर उनको ले डाउन कर दिया जाता था. Another important तरीका of finding difference is artifacts. Artifacts you understand? हम बहुत सारी चीजें अपने घरों में सजाते हैं, लगाते हैं. तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो यूटिलिटेरियन होती है बेटा. यूटिलिटेरियन मींस यूटिलिटी, आप रोजमर्रा के जीवन में आप चीजों को यूज करते हो. और कुछ आइटम्स को हम बोलते हैं लग्जरी आइटम्स. लग्जरी आइटम मींस वो चीजें जो लग्जरियस होती है. लग्जरियस मींस ओनली रिच कैन अफोर्ड दैट. तो जहां पर सिंपल पॉटरी आइटम्स मिले हैं, तो इसका मतलब वहां पर लोकल लोग रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे. और जहां पर नॉन लोकल मटेरियल मिला, फॉर एग्जांपल फेंस मिला है, तो ऐसी जगहों पर कौन से लोग रहते होंगे? द रिच पीपल यूज्ड टू लिव. सो फ्रॉम दैट वी आर एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल. दो चीजों को हमने यहाँ स्टडी किया है. वन आर द बरियल्स और सेकंड आर द आर्टिफैक्ट्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ as we are talking about the name of the chapter, bricks, beads and bones. Bricks we have discussed. Now we are coming to beads. Now variety of materials, बहुत सारी तरीके की चीजों को यूज किया जाता था बीड्स को बनाने के लिए. कुछ एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाले हुए हैं. We have carnelian, jasper, crystal, metals like copper, bronze, shell, faience, terracotta, burnt clay,
everything they used for making beads. कुछ कुछ beads दो से ज्यादा stones को मिला के बनी होती थी. Not only the material was different, even the shapes were different. You can see in point number 3, different shapes. We have cylindrical, spherical, different shapes were being used, and they were also being decorated. Simple as well as complex techniques were used to make beads. For example, red color of carlin was obtained by firing the yellowish raw material. और बीड्स को अलग अलग स्टेजेस पे प्रोड्यूस किया जाता था, और बीड्स को बनाने के लिए बहुत सारी स्टेप्स लिए जाते थे. उसकी ग्राइंड करते हैं ना, घर पे ग्राइंडर यूज करते हैं. उसकी पॉलिशिंग, उसको ड्रिल करना. ड्रिल क्यों करते थे? बिकॉज बहुत सारे बीड्स को एक साथ जोड़ना होता था. उसके अंदर आप धागा डालेंगे, कोई थ्रेड डालेंगे, तो उसके लिए उनके अंदर क्या किया जाता था? ड्रिलिंग की जाती थी. तो कौन कौन सी एक्टिविटी यूज हो रही बीड प्रोडक्शन के अंदर? ग्राइंडिंग हो रहा है, पॉलिशिंग हो रहा है, और ड्रिलिंग हो रहा है. different sites were there which were being special center for cell objects. For example, Nageshwar and Balakot. Balakot is in Pakistan. Nageshwar is where? Gujarat. Different special centers. अब how do we come to know? कैसे पता चलता है कि X particular site के ऊपर बीट या क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था? So कैसे पता चलता है? हमें बहुत सारा वेस्ट मिला. सपोज अगर वेस्ट मिला है तो वहां पर क्या होता था? होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा. हमें ड्रिल्स मिली हैं. ड्रिल्स मिलने का मतलब क्या है? कि वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा. प्लस वहां पर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. तो इन सारी चीजों को देखकर हमें पता चलता है दैट प्लेसेस वर बीइंग यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. नाउ एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई इतनी सारी मटेरियल से लेके वो क्या बनाते थे? बीड्स बनाते थे. और सारा मटेरियल लोकल था नहीं. लोकल मींस सारा मटेरियल वहां पर नहीं मिलता था. तो बहुत सारा मटेरियल उनको बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता था. अगर बाहर से प्रोक्योर करना है डियर फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ऐसी सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे ताकि आपके पास वो मटेरियल वहां से आ जाए. तो हड़प्पन्स ने भी अलग अलग तरीके यूज किए. व्हाट दे डिड? एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स. अलग सेटलमेंट्स बसा दी अपनी ताकि वहां से रॉ मटेरियल आ सके. फॉर एग्जांपल नागेश्वर, बालाकोट शॉर्ट गई लैपिस लजुली के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद वो एक्सपेडिशन भेजते थे, अपने अपने लोगों को भेजा एक पर्टिकुलर जगह, जैसे खेतरी से. किस लिए? कॉपर लेने के लिए. राइट. ट्रेड भी होता था. फॉर एग्जांपल ओमान से कॉपर आता था, तो हमें पता चलता है कि ओमान से भी ट्रेडिंग रिलेशन थे. अब ये कैसे पता चला कि जो कॉपर यहाँ पर आए हुए हैं इंडस वैली साइट्स पे, दैट इज फ्रॉम ओमान? हाउ डू कम टू नो? बिकॉज द कॉपर विच इज बीइंग फाउंड एट ओमान में जो कॉपर मिलता है उसके अंदर ट्रेसेस ऑफ निकल था. और जो हमारे यहाँ कॉपर मिला ओमान से, उसके अंदर भी ट्रेसेस ऑफ निकल था. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट देयर वर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. अनदर थिंग दैट डिपिक्ट that there was long distance trade is that we have found a seal जिसके ऊपर बोट बना हुआ है, शिप बना हुआ है. इसका मतलब शिप का यूज किस लिए होता था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए. हड़प्पन जार मिला है, मेसोपोटामियन जार, यानी कि यहाँ का सामान वहां मिला है, वहां का सामान यहाँ मिला है. हड़प्पन जार हैज बीन फाउंड इन ओमानी साइट्स. व्हाट डज इट इंडिकेट? हड़प्पा का जार वहां कैसे पहुंचा? इट सेज दैट, इट सजेस्ट दैट, इट कंफर्म्स दैट देयर वर ट्रेडिंग रिलेशंस विद डिफरेंट sites. Right? I hope things are clear till here. Let's move further. Now, seals were being used. For what purpose seals were being used? Seals का यूज अलग अलग seals मिली हमें. वो किस लिए यूज होता था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए. इफ seal is intact, इसका मतलब the material is not being compromised. seal आइडेंटिटी करती थी किसने इसको भेजा है. राइट. हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हड़प्पन साइट्स के. तो इन इंस्क्रिप्शंस को के ऊपर बहुत सारे साइंस मिले हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन सिंगल मिला है जिसमें सबसे ज्यादा साइंस थी, वो 26 साइंस, लॉन्गेस्ट है. हमें यह भी पता चलता है कि राइटिंग बहुत सारी चीजों के ऊपर मिली है. एंड नंबर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर राइटिंग मिली है. राइट. और इससे पता चलता है लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड. जब अलग अलग चीजों पर, जार्स के ऊपर, सील्स के ऊपर एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर राइटिंग मिल रही है तो उसका मतलब लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड. बट हमें एक बात ध्यान रखनी है दैट इंडस वैली साइट स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडेसिफर्ड. आज भी हम उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं. ये पता लगता है दैट इट इज बीइंग रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अराउंड 400 साइंस सिंबल्स एंड साइंस वर बीइंग यूज्ड. वेट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टोन को यूज करते थे. ऐसा स्टोन
जो अपना वेट लूज नहीं करता था, दैट इज नोन एज चर्च स्टोन. चर्च स्टोन वाज बीइंग यूज्ड टू मेजर वेट, राइट. तो बाइनरी डिनोमिनेशंस के अंदर वेट को मेजर किया जाता था. अब इतनी सारी सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी सारी साइट्स, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, तो हमें कैसे पता चलता है कि where were there was some central authority, were there were kings or not? Now again, our reach is limited as we are not able to decipher the script. But whatever material remains and whatever systems we have found, we have come to a conclusion कि हाँ कहीं ना कहीं कोई central authority जरूर रही होगी. It may be one single ruler or it may be a group of people जो command करते होंगे. For example, equal size of bricks, planned drainage system, same structure of houses, trade on such a large scale, uh, then settlements were being established at different sites. All those things suggest that there was some sort of single ruler or some sort of central authority or a group of people which took all those complex decisions. इतनी सारी बड़ी सिविलाइजेशन को मैनेज करना, इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना, जरूर कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी. हमें एक स्कल्पचर भी मिला है जिसको हमने क्या नाम दिया गया है, प्रीस्ट किंग. प्रीस्ट किंग. Okay, let's move further. Now, as happens with all civilization, जो civilization एक बार आती है, that also ends one day. Whatever material remains से हम लोग construct कर पाए हैं about the reasons of downfall of Indus Valley civilization, it may be flood, it may be it may be some drought, it may be deforestation, overuse of landscape, shifting of river, attack from somebody, or climate change. Because of all those reasons, the civilization might have ended. Now, how do we observe that civilization has ended? Number one, artifacts decline हो गए, वेट का यूज होना डिक्लाइन हो गया, जो कॉमन वेट फॉर्म यूज होता था. सील्स डिसअपियर हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिसअपियर हो गया, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स डिसअपियर हो गए, और एक रूरल वे ऑफ लाइफ आ गया. पहले अर्बन वे ऑफ लाइफ था, अब रूरल वे ऑफ लाइफ आ गया, और इस सब को हम बोलते हैं लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर. इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये बात क्लियर कर. आगे चलते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर सीन, नाउ although we give the credit to John Marshall, Rakhaldas Banerjee, Dayarama Sahni, that they were the people behind the discovery of Indus Valley civilization, but mind it, Cunningham, who was the first Director General of ASI, Archaeological Survey of India, he got a chance to talk about this particular civilization. One Englishman gave him a seal. Now, Cunningham, he was not able to find out this seal belonged to which period, so he tried to put that seal into the Ganga Valley period, because कनिंगम की जो नॉलेज थी वो बेस्ड थी जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते थे इंडिया के अंदर. दे केम अबाउट द गंगा वैली सिविलाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उनको लगा दैट दिस सील बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर पीरियड. सो इफ ही वुड हैव ऑब्जर्व्ड मोर, ही वुड हैव गॉट द चांस टू डिस्कवर ए न्यू सिविलाइजेशन. तो उन्होंने उस पर्टिकुलर सील को जिस टाइम फ्रेम की उनको नॉलेज थी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रख दिया. सो because of that reason he missed the chance of discovering a new civilization. That's why this is known as Cunningham's confusion, because he missed that opportunity. Moving forward, now this, as I told in the previous slide, that this is being discovered by Dayarama Sahni, Rakhaldas Banerjee under the leadership of John Marshall, who was the then Director General of ASI. So accordingly, this site was being discovered. Now, two things we need to keep in mind. How do we do the excavation? Excavation होने से हम जमीन की खुदाई कैसे करते हैं? इनिशियली क्या होता था, एक माउंट को लिया जाता था, उसको ऊपर से नीचे खोद दिया जाता था, और उसमें से जो भी चीजें निकलती थी, that being used to put into one particular time frame. इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज हो रही थी. आर.ई.एम. व्हीलर जब 1944 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल बन के आए, उन्होंने अब स्टैटिग्राफी का ध्यान रखना शुरू किया. आप अपनी बुक में देखेंगे, स्टैटिक यानी कि जिस हाइट पे जो चीजें मिल रही हैं उनको अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर रखा गया, और हम एक सिंगल माउंट से ही बहुत सारी अलग अलग टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दैट प्रिसीजन, दैट मिलिट्री प्रिसीजन वाज बीइंग ब्रॉट बाय आर.ई.एम. व्हीलर, और सिंगल माउंट से हम अलग अलग टाइम पीरियड्स के बारे में बात कर सकते थे. वो किस डेप्थ के ऊपर मिल रहे हैं, किस
गहराई के अंदर मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर डाला गया. सो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन दैट वाज बीइंग मेड बाय REM व्हीलर. लेट्स मूव फर्दर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, वट एवर मटेरियल रिमेन्स वी हैव फाउंड, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट. उसको पढ़ने के बाद हम उनको एनालाइज करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हिस्ट्री को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. तो जो मटेरियल रिमेन्स मिले विच बिलोंग टू द हड़प्पन पीरियड, उसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं. पहले क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है. दूसरे नंबर पे देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, क्या ये टूल है, क्या ये ornament है, क्या ये बोथ है. उस जो पर्टिकुलर मटेरियल मिला है, पहले तो किस चीज का मिलके बना हुआ है, एंड सेकंड इज व्हाट इज द फंक्शन. थर्ड हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि वो कहाँ मिला है. क्या वो किसी ड्रेन में मिला है, क्या वो किसी बरियल साइट पे मिला है, क्या वो किसी कुएं के अंदर मिला है. जहां मिला है उससे हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं. फिर हम कोशिश करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस से. फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्लोथिंग के बारे में पता चल रहा है, तो जो स्कल्पचर्स मिले हैं उन्होंने किस तरह की क्लोथिंग पहना रखी है, उसके थ्रू हम जज करते हैं कि उस समय के लोग किस क्लोथ का यूज करते थे. इसके बाद हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं. फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, कल्चरल सीक्वेंसिंग यूज करते हैं, नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं. इन सारी चीजों को यूज करके हम जो भी मटेरियल एविडेंसेस मिलते हैं उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं. Right, coming back to the, I hope this is the last slide. इसके बाद there is a map. सील्स की हमने बहुत बात की, है ना. बहुत सारी हम सील्स की बात करते हैं, बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स को लेके हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता होगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें जो भी अनयूजुअल लगता है हम उसको स्टडी करते हैं. एक हैवीली ज्वेल्ड टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन मिली, हमने उसको क्या नाम दिया, हमने कहा दिस इज मदर गॉडेस. इसी तरीके से सील्स को एग्जामिन कर हम बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलाते हैं. जैसे वन हॉर्न एनिमल मिला, उसको मिथिकल एनिमल बोलते हैं, यूनिकॉर्न जिसको बोला गया. एक और सील मिली जिसे हम पशुपति सील बोलते हैं, उसमें एक योगी बैठे हुए हैं, योगी पोस्चर के अंदर एक पर्सन बैठे हुए हैं और ही इज बीन सराउंडेड बाय एनिमल्स, और उसको नाम दिया गया प्रोटो शिवा. लेकिन जब हम सील को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड के अंदर भगवान शिव के नाम का जिक्र नहीं है. वहां पर जिक्र होता है रुद्र का, बट रुद्र ना तो योगी है ना ही प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स है. सो हु इज ही? तो बाद में ये पता लगता है कि शायद ये सील एक शमन की हो सकती है. शमन कौन होते हैं? जो सेकंड वर्ड से, दूसरे वर्ड से इंटरसीड कर पाते हैं. So all those things have been covered in this particular chapter regarding Indus Valley sites, their life, how they used to live, different features of Indus Valley sites. I hope I am able to clear your doubts regarding this particular chapter. Uh, Again, I'll be coming back with a class of revision for the same. In the meantime, you go through this PPT, whatever I have said, go through that, read the book, and I'm very sure that this is going to help you to understand the chapter in a better manner. And this is the map work, this is being attached, important points have been marked, नीचे detailing दे रखी है, you can practice this map also. Now I am taking leave, we'll be coming back with a new chapter, that is chapter number 2 very soon. Till then, keep learning, keep enjoying.